पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज ज्यादती के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। 13 सितंबर की रात हो चुकी है इधर अमेरिका में और 14 सितंबर की सुबह दोपहर हो गई होगी जब तक ये पाकिस्तान में शो चलेगा। आज का महाज जाति के नाम इसलिए है क्योंकि जाति से हम यूज्ड टू हो गए हैं, हमें अब आदत सी हो गई है। और वो जो आतिफ असलम का गाना था, अब तो आदत सी है मुझको जाति होने में आई गेस ये गाना जो है ये अप्लाई होता है क्योंकि सालों से नहीं दहाइयों से जाति हुए जा रही है। कभी कोई बूट पहन के जाति करता है, कभी कोई शेरवानी पहन के जाति करता है, कभी कोई दाढ़ी रख के जाति करता है, कभी कोई दाढ़ी मुंडवा के जाति करता है, कभी कोई कहता है कि मैं इस्लाम के नाम पे जाति कर रहा हूँ, कभी कोई कहता है कि मैं एनलाइटन मॉडरेशन के नाम पे तुम्हारी धज्जियां उड़ा रहा हूँ, तुम्हारे आइन की, कानून की और तुम्हारी इज्जत की। एनीवेज, शायद हम ये डिजर्व करते हैं, इसलिए लोग कुरान की वो आयत कोट अक्सर करते हैं जिसमें लिखा है कि जैसे लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान अल्लाह ताला उन पर नाजिल करेगा। तो शायद इसीलिए शायद हम हैं ही ऐसे कि हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान नाजिल किए गए हैं। अब लोग इनको डाकू डफर अलायंस बोलें जैसे इमरान खान साहब बोलते हैं, या मैंने जो नाम रखा है कि आर्मी डाकू चोर अलायंस, एडीसी अलायंस, या खुद जो इन्होंने नाम रखा है अपना हाइब्रिड रेजीम या पीडीएम, जो भी कर लें आप, ये इस वक्त आजकल लेटेस्ट जो मॉडल है जाति करने वालों का, ये हमारे ऊपर नाजिल हुआ है, हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है। मगर हम यूज्ड टू हैं, हम भी ढीठ हैं क्योंकि हमें जाति की आदत है और ये भी ढीठ हैं क्योंकि इन्हें जाति करने की आदत है। तो ये जो बैलेंस है ये चल रहा है और पाकिस्तान भी चल रहा है। मगर जब बाहर से कोई बंदा आके जाति करता है तो क्या होता है? ये तो अलाउड नहीं है। अंदर की जाति अलाउड है क्योंकि जाति करने वालों का भी पाकिस्तान से ताल्लुक है और जाति सहने वालों का भी पाकिस्तान से ताल्लुक है। मगर बाहर से 56 ममालिक की एक ग्रोह से जब जाति हो तो क्या होगा? ये आज की खबर है। ड्रॉप साइट न्यूज जो अमेरिका का जबरदस्त इंडिपेंडेंट जरीदा है, उसने आज एक बॉम्बशेल स्कूप स्टोरी निकाली है और वो रिपोर्ट निकाली है जिसमें ये ज्यादती नजर आती है। ये रिपोर्ट पिछले साल फरवरी 8 के इलेक्शन के बाद छपी थी। इस रिपोर्ट का नाम पाकिस्तान जनरल इलेक्शन 8 फरवरी 2024 है और ये कॉमनवेल्थ की तरफ से ये रिपोर्ट आई है। अब कॉमनवेल्थ है क्या? कॉमनवेल्थ एक्चुअली उन ममालिक का ग्रोह है, एक क्लब है जो एक जमाने में अंग्रेज राज जो है गोरा साहब के नीचे सर्व करते थे। सब कॉलोनीज थी, इसमें इंडिया है, इसमें श्रीलंका है, इसमें मालदीव्स है, इसमें अफ्रीका के दीगर ममालिक हैं, इसमें न्यूजीलैंड है, इसमें कनाडा है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इसमें पापुआ न्यू गिनी है, इसमें बहुत सारे साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशियन, अफ्रीकन, कुछ यूरोपियन और इवन नॉर्थ अमेरिकन ममालिक हैं। अब हर साल या हर इलेक्शन जो पाकिस्तान का पिछली दहाइयों में हुआ है उस पे ये लोग आए हैं। कॉमनवेल्थ ने ऑब्जर्वर्स का एक ग्रुप भेजा है। इस बार जो ऑब्जर्वर्स का ग्रुप भेजा उनके सिग्नेचर आप देख सकते हैं। एक सिग्नेचर तो इसको गुड लक जोनाथन साहब का नजर आ रहा है आपको। ये साबिक सदर थे नाइजीरिया के, ये इस डेलीगेशन को लेके आए जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस डेलीगेशन में ऑस्ट्रेलिया की क्रिमिनोलॉजी की और जेंडर की एक्सपर्ट थी, इसमें फिजी के इलेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन थे, इसमें जर्नलिस्ट थे, गयाना के, केनिया के बाउंड्रीज और इलेक्शन कमीशन के फॉर्मर चेयरपर्सन थे, इसमें न्यूजीलैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इसमें पापुआ और न्यू गिनी के सेक्रेटरी ऑफ मीडिया काउंसिल थे, इसमें सेंट लूसिया के फॉर्मर स्पीकर ऑफ द हाउस थे, इसमें फ्री मीडिया ग्रुप के सियरा लियोन के एक मशहूर जमाना एडिटर इन चीफ थे, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ श्रीलंका के रिटायर्ड कमिश्नर थे, इसमें टांजानिया के साबिक चीफ जस्टिस थे, इसमें यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के सोलिसिटर इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन थे और जाम्बिया के इलेक्शन एक्सपर्ट थे। ठीक है, ये दीगर लोग तकरीबन 1.5-2 दर्जन लोग, ठीक है, ये पाकिस्तान आए, हफ्ता 10 दिन 15-20 दिन रहे, इनको आपके पैसों पे हमने ठहराया, हमने ठहराया ना, हमारा मुल्क है, हमने इनको ठहराया, ये पूरे मुल्क में घूमे और इन्होंने फिर ये एक रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट आपके सामने है जो मैं चला रहा हूं। इन्होंने लंबी चौड़ी रिपोर्ट लिखी
जिसमें पूरा एक ग्लॉसरी है। DRO क्या है? डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ISI क्या है? हर एक को पता है। IJI क्या है? उसका भी लिखा। पूरा बेचारों ने रिपोर्ट इतनी लंबी चौड़ी ग्लॉसरी के साथ फिर इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट लिखी। अब मैं चलाता रहूंगा रिपोर्ट, चलते रहे 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 चलते रहे, मैं नहीं चला रहा। 161 पेज की रिपोर्ट लिखी, टेढ़ी भी लिखी जैसे आप देख सकते हैं, टेबल्स बनाई, ग्राफिक्स बनाए, पूरा इंतजाम किया। और चक्कर क्या था? अल्टीमेटली रिपोर्ट का जो एस्पेक्ट था बड़ा सिंपल था। रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि PTI के साथ ज्यादती हुई है। रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि अवाम के साथ ज्यादती हुई है। रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि कैंडिडेट्स के साथ ज्यादती हुई है। रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद कर दिया गया। रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि PTI से उसका बल्ला गलत छीना गया। रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि PTI के वर्कर्स को और PTI के कैंडिडेट्स को उठाया गया है। रिपोर्ट में वही बातें हुई जो हम पिछले फरवरी 8 की शाम से कर रहे हैं। रिपोर्ट में कोई ऐसी नई चीज नहीं थी जो हमने पिछले 1.5 साल से डिस्कस ना की हो। रिपोर्ट में वही बातें थी जो हम रोज घर में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के, डाइनिंग रूम में बैठ के, थड़े पे बैठ के जो बातें हम डिस्कस करते हैं कि यार फौजियों ने ये नवाजू को और जरदारू को ये इलेक्शन जो है, फौजियों ने इमरान से लूट के ये इलेक्शन उनको दे दिया। दैट्स इट। रिपोर्ट में यही लिखा था। देयर वाज नथिंग न्यू इन द रिपोर्ट। मगर रिपोर्ट जो है कॉमनवेल्थ ने लिखी थी, वजाहत सईद खान ने नहीं लिखी थी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने नहीं लिखी थी, वॉशिंगटन पोस्ट ने नहीं लिखी थी, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस ने नहीं लिखी थी, विल्सन सेंटर ने नहीं लिखी थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने नहीं लिखी थी, कॉमनवेल्थ ने लिखी थी, गोरे साहब ने लिखी थी। जिधर से इनकी लॉयल्टीज शुरू होती हैं, जिधर से इनकी जिंदगी शुरू होती है और जिधर खत्म होती है, मतलब बर्तानिया, लंदन में कॉमनवेल्थ की सेक्रेटेरिएट है आज भी, उससे ये रिपोर्ट आज लीक हुई है। क्योंकि उस सेक्रेटेरिएट में ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेट हो गए थे क्योंकि पिछले 1.5 साल से ये रिपोर्ट छप नहीं रही थी, दबी हुई थी, ये फाइल दबाई गई थी। क्योंकि ये जब रिपोर्ट इन्होंने लिखी इन 10, 15, 20 इलेक्शन ऑब्जर्वर्स ने, जिनके नाम अभी मैंने आपको सुनाए हैं, और ये फिर से रिपोर्ट चलते हैं, ये लंबी चौड़ी रिपोर्ट लिखी, इतनी लिखी कि मेरी स्क्रीन टेढ़ी होगी लिख लिख के। इनकी जब रिपोर्ट छपी तो वो उसकी एक कॉपी उन्होंने पाकिस्तान की इस हुकूमत को भेजी। केयर टेकर ने, और मतलब इसके बाद जो नई हुकूमत आई है, उन्होंने जब ये फौरी तौर पे संभाला, उन्होंने कहा ये रिपोर्ट अभी ना शाया करो। वो दिन है और आज का दिन है कि ये रिपोर्ट गायब हुई थी, मगर अभी ड्रॉप साइट ने ये रिपोर्ट निकाली है। अब सवाल कुछ बनते हैं। एक तो सवाल बनता है कि रिपोर्ट में क्या है, उसका लब्बे लबाब अभी आप सुनेंगे जो मेन रिपोर्टर हैं उनसे मैं अभी इंटरव्यू करने वाला हूं। एक तो आप वो सुनेंगे, उनका इंटरव्यू सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, क्यों आपको बताते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट के हाइलाइट्स क्या हैं। दूसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रिपोर्ट को छुपाया क्यों गया, और इसका जो जवाब है वो बड़ा सिंपल है। एक बैनुल अक़वामी कंस्पिरेसी है या एक बैनुल अक़वामी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान की मिलिट्री बैक्ड इल्लीगल हुकूमत के साथ, कॉमनवेल्थ जैसे बड़े बड़े इदारों की, कि पाकिस्तान में इमरान खान की PTI के साथ जो ज्यादती हुई है वो बाहर ना आए, और उनका जो स्टेक है, उनका जो क्लेम है कि हम इलेक्शन जीते हैं, वो दबा रहे, हालांकि वो हक की और सच की बात करते हैं। अब इसमें बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं। क्या है इमरान खान में, उसके सर पे कौन से सींग हैं? PTI के सर पे कौन से सींग हैं? मेरे और आपके सर पे कौन से सींग हैं कि ये हमारी बात, हमारे साथ जो ज्यादती हुई है उसके ऊपर अब ये फाइलें दबा रहे हैं? ये कोई बलूचिस्तान का कोई FC का विंग कमांडर नहीं फाइल दबा रहा, ये कोई सियालकोट का कोई पटवारी फाइल नहीं दबा रहा, ये कोई इस्लामाबाद का कोई DC या लाहौर का कोई असिस्टेंट कमिश्नर फाइल नहीं दबा रहा, ये कोई FIA का DIG नहीं फाइल दबा रहा। ये फाइल कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने दबाई है। 2016 में ये औरत इलेक्ट हुई है, अभी फिर री इलेक्ट हुई है 2022 में,
क्योंकि इसके लेवल पे ही ये बात हो सकती थी। तो सवाल बनता है, 56 ममालिक की ये ऑर्गेनाइजेशन जो अक़वाम मुत्तहिदा जितनी पुरानी है, 75 साल पुरानी है कॉमनवेल्थ, 75 साल पुरानी है, 56 इसके मेंबर्स हैं। क्या ये सब मिले थे? क्या इतनी बड़ी कंस्पिरेसी है कि इतना बड़ा ग्रो, इतनी इंपॉर्टेंट अपनी खुद रेपुटेशन खराब आज उनकी हुई है? पाकिस्तान की फौज की तो रेपुटेशन है ही खराब, ये तो है ही। पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो बाहर जाके लोगों में आ नहीं सकता। आज मरियम की आपने नहीं देखी, वो दूर से हाथ हिला रही थी लोगों को, अवाम में ये लोग घुस नहीं सकते। तो आपको पता है, यू नो हाउ इट इज। बट वो उनको तो छोड़ें, मैं तो इनके सवाल मैं पूछता हूं कि इन्होंने अपनी कैसे क्यों रेपुटेशन खराब की है, इन्होंने फौजियों के साथ क्यों दिया है, ये फाइल क्यों दबाई है? ये सवाल मैं पूछता हूं अब शो के दूसरे हिस्से में, एक्चुअली उस रिपोर्टर से जिसने ये स्टोरी निकाली है अमेरिका से। मुर्तजा हुसैन के साथ अब मेरा इंटरव्यू है। अच्छा इंटरव्यू है, गौर से देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मेंबरशिप ऑप्शंस सब लगी हुई हैं, मेंबरशिप्स के अलग प्रिविलेजेस होते हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो करें, मेरा सबस्टैक फॉलो करें, और यस, ड्रॉप साइड न्यूज की कहानी भी लगी हुई है, उनको भी फॉलो करें। और अब इंटरव्यू की तरफ चलते हैं, इस सोच के साथ, इस सवाल के साथ कि इन सालों ने हमारी ये स्टोरी क्यों दबाई है, ये फाइल क्यों दबाई है। Now, to better situate ourselves with this groundbreaking story, this great scoop is one of the writers, the reporters himself, Maz Hussain, Murtaza Hussain on the byline, Maz to his friends. Welcome back to Mahaz, man. How you doing? Good to be here. Good to be here. Great story, Maz. Great scoop. Tell us more. What's the biggest takeaway? I was shocked that here is 56 member club. I wouldn't call it a coalition, which is supposed to do the very best practices of for king and country, and is supposed to be operating under the spirit of one Commonwealth. And here they are staking their reputation to uphold this regime. I wouldn't even call it a government at this point. But what's your biggest takeaway? Yeah, so effectively, as people may be aware if they've read the story on drop sites, there was a report, or there was an observer group from the Commonwealth Secretariat sent to observe the Pakistani elections in 2024. That group issued a statement at the time saying that a report would be forthcoming, and they normally, observe elections and democratic processes throughout the former British Commonwealth countries. But that report about Pakistan never came out. And I was very curious because never in the history of the organization has a report just failed to come out after, Right. the time was spent to go observe the elections and so forth. So, inside the Commonwealth organization, it was very controversial that happened. And a lot of people were not happy that what it suggested that the report would not come out about Pakistan, because the report itself contained many damning details about how that election was conducted. Specifically, they pointed to the repression of Imran Khan's party, the Pakistan Tehreek-e-Insaf, violence, abductions, disappearances, internet disruptions, manipulations of polling stations. And the report is written in very diplomatic language. So the fact that it includes these details was very, very, staggering. So the report didn't come out. Evidently, there were some communications between the Pakistani side and the Commonwealth side about the contents of the report. They were deemed embarrassing to the Pakistani government, which was trying to downplay what many people saw effectively of the stealing of the election from PTI in 2024. And the dissent and the discomfort inside the Commonwealth over that question, over the question of this report, has persisted to this day. So I started reaching out to them about this to find out more, to sort of gauge the official reaction of the organization to the facts been suppressed. And it's kind of funny because after a bit of back and forth, multiple kind of requests to get some information, they just gave me a small statement, which is included in the story there, saying that, oh yeah, the report's scheduled to come out this month. They did not respond to subsequent questions about why it sat there for the last year and a half when it contained these very, very damning details about
the fraudulence of that election, but there was no reply to that inquiry. So effectively, they shut up the report. The people who did the report, who compiled the analysis itself, did their jobs correctly. They went and observed the election fairly. They wrote down what they saw. They brought it back, but the Commonwealth decided to hush it up, and the reason appears to be the geopolitical interest in the current Pakistani regime. Now, stop right there because this is fabulous, right? We must recap. So, the Commonwealth is 75 years old. It's got 56 member states. Many of those states have hold elections regularly. When they're about to hold elections, they invite a group of 10, 15, 20 Commonwealth observers. Some of these people are high ranking former officials, some of them are serving officials. In this case, we have, as we can see in this report, people all the way from, Sri Lanka, Zambia, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kenya, Guyana. These are all, of course, as we can see, Commonwealth countries, but these are all senior people. Some are parliamentarians, some are election commissioners. The leader himself, the writer, the main author of the report, is a former president of Nigeria. This is not a bunch of college students or grad students making notes and doing an externship. This is real, and they do this. They've been doing this, as far as I'm concerned. I've covered a few elections in Pakistan, Maz. They've been doing this for decades. How did the Pakistani government have the leverage? I want to know, how does any government have the leverage to tell the mighty Commonwealth Secretariat in the heart of London, which is answerable to 56 countries, and convince them to hold the report, to sit on the report indefinitely till Dropsite News bangs it open? How do they have the leverage? Is there coordination? Is there collaboration? They were obviously on the same page on this one. Well, it's kind of very, very revealing, actually, because if you look at the geopolitical context currently in which this report is being suppressed and which all these events over the last 2 years in Pakistan have taken place, it's one in which the views of Europe and the United States over the composition of Pakistan's ruling regime has been deemed to be a issue of the utmost importance, and certainly more important than any rhetorical commitments to democracy or the civil rights of Pakistanis and things like this, which are ultimately apparently negotiable in these circumstances. So this report, there was quite a bit of back and forth, to my understanding, between the Pakistani side and the Commonwealth side over the report. The British government, as well as the American government, is very interested in maintaining a military-backed regime in Pakistan. They do not like Imran Khan. They didn't like the PTI. They viewed it as stepping on its toes vis-a-vis its foreign policy prerogatives, and most famously, his criticisms of perceived American and British, European intervention in Pakistan, and also the Ukraine war, of course, which was a major irritant in this relationship. So I think that what happened here is that there was a situation where the geopolitical considerations overrided the very high and noble stated values of the Commonwealth Secretariat. As you said, it's a very hallowed and old and important institution. It's by no means fly-by-night NGO. It's a very, very serious organization. It's a legacy of the British Empire, one of the major institutional legacies of it. And it's, there's no way of putting it lightly. It's humiliating for the Commonwealth to have behaved in this way, to have subjugated every value that it claims to support, and continues to send observers, very important people around the world, to uphold these values in elections and other democratic processes, to just throw them out the window, to hold up for the exact opposite purpose of what they claim to be doing, to support a military regime in its suppression of an election. Exactly. I mean, they're damaging their own credibility. Now, you and I were much younger men when it happened, but back in the day, in the late 90s, when Pakistan had its last official coup, Maz, you'd be happy to know, in 1999, 98, when there was that massive coup in the late 90s by Musharraf, who overthrew Nawaz Sharif, one of the first things which happened soon after the coup was Pakistan got kicked out of the Commonwealth, and was kicked out of the Commonwealth for several years. And it took a long time, and for democracy to return, or democratic reforms to return to Pakistan,
for the Commonwealth to embrace Pakistan back. I'm not talking about I know that I'm talking about last century, but that was just 2 decades ago. How has the Commonwealth Secretariat in London managed to damage itself and its own credibility, the very premise of what it stands for, to promote democracy and unity? Because, it's going to be sending more observers to other countries soon. Aren't those observers going to be less credible at this point after the story? Well, I'll tell you, when I started reaching out for comment officially to the Commonwealth to inquire about this report, internally they were freaking out about it. They knew they'd been caught. They were hoping this would go away. And, I'm inquiring as an American journalist. I'm not inquiring as, what they would, I guess, characterize as a mere Pakistani who's inquiring about the democracy in their country. They got freaked out because an American publication was inquiring about it. They seemed content to ignore Pakistanis' inquiries about this when they're asking about it or trying to inquire to see what was going on with their own election. They were content to oversee and, collaborate in the suppression of democracy inside Pakistan. But when a reporter from a Western outlet started inquiring, they got very shaken up, and I think they realized that what they had pulled here had been exposed. And they haven't really responded to, after I told them that I'm publishing the report. They have not gotten back to me after that. But I can imagine it's created more, concern inside the organization, because they did not even get a chance to beat us to the punch and try to publish it before us after we started inquiring about it. We kind of hit them first. So, I think that it's a very, very damaging blow to the organization. And, it's not that they should stop observing elections, but there needs to be serious internal reforms about evident corruption that allowed this to happen. Or collusion, at the very least, with a corrupt military regime. So, question, Maz, where does the buck stop? With the boss, the Secretary General, Patricia Scotland, with Jonathan Goodman, where does the buck stop? As far as I'm aware, it's not the fault of the actual observers who went over there. They did their job. They wrote down what was true. They didn't file, as far as we know, a report which in any way excluded observations that they made. They pretty much told it as it is. They wrote down, they were diplomatic about it, but they wrote down that there were serious infringements on civil liberties, the right to organize, and the right to a free election in Pakistan in 2024. The real issues with the leadership of the organization, who evidently appear in practice to have colluded to prevent the publication of this report. Their own observers who invested their time, their credibility, to go to Pakistan, they took on basically a trust of the organization and the people of Pakistan to ensure that their election was dispensed with fairly. They did their job, but their work was never brought to light. That's actually the real scandal there. It's an organizational one. It's not about the team of observers themselves. Now, I know you're bound by the code to protect your sources, but you do mention that your source was frustrated. Your source was frustrated about the report not coming out, being suppressed. Clearly, that means that there are people, good people inside this organization, which wanted to continue to work in the spirit it was founded for. What do you make of that currently? And what do you also make of the fact that, frankly, there's nothing which is particularly damning in this report, which is new? I mean, we've heard this before. We've heard about unlawful abductions of PTI candidates and workers. We've heard about the internet disruptions as well. We've heard about the PTI's symbol being ripped away from it and it being disenfranchised. These are now months old and believed facts. They're widely cited. There was nothing in this report which was so damning, or rather, everything is quite damning, to be honest, but so new that they were trying to bury it. Well, I had the same thought, to be honest with you. Like all this stuff, if you observe Pakistani politics and you pay attention to the election, you know that this happened. It wasn't a secret that the election was effectively rigged. My own interpretation is that, Pakistan's institutions, a lot of them, including the military, they have a colonial lineage.
So as such, they are in awe of the West, you could say. So a hallowed Western institution saying it is different from us saying it in the press or on social media and so forth. It's a pretty significant, in that from that perspective, sort of negative observation. So my view is that they were more, perturbed and more disturbed by the idea of the British Commonwealth, this incredible institution in their eyes, writing in black and white what they had done, as opposed to people knowing but not having the same imprimatur of legitimacy. And as you said, it's a big organization. There are good people there. There are people who invested time and energy in making this report, who believe in the mission of the organization. And certainly, I can imagine they would not be pleased that not only their labors would go to waste, but also, the own values of the institution would be besmirched in this way, in a very, very unjust cause that has caused suffering to a great many people. Maz Hussain, thanks, man. Great reporting. Again, Maz Hussain, Murtaza Hussain, Ryan Grimm, and Waqas Ahmed were the main reporters for this fantastic story. I wouldn't say it's a story which tells us how bad Pakistan's election was last year in February 2028. You can catch the story, of course, on the link attached, as well as on Maz's Twitter feed, as well as dropsidenews.com. But for me, the greatest takeaway in all of this really is that there are international agencies, multilateral agencies, the international establishment, as some people call it, which is actually hand in glove with Pakistan's military-led establishment to cover up, to help them cover up their act. And this goes on to underscore a very basic, sad fact that the millions of people who voted in Pakistan that day, that morning, that afternoon, and that evening on February 8th were disenfranchised not just by their local leaders, but by some sort of global order and collusion. That's sad and scary. Maz, thanks for being on the show, man. I'll talk to you soon. Thanks for having me, Wajahat. All right, that was Murtaza Hussain. You can catch him and Ryan Grimm and Waqas Ahmed and the rest of their team on dropsidenews.com. Great story. Share, like, subscribe to my page. Make sure you try to get a grip on the story itself and support independent journalism. Dropside is independent, so is this channel. We need your support. Thus, sharing, liking, subscribing, commenting, checking out our WhatsApp options, checking out our WhatsApp, our membership pages, as well as my Substack, all will probably be good for you at the end of the day. I'll talk to you very soon. Pakistan, Zindabad.